teachers, parents, Shiva members, and dear friends. A warm and heartful welcome to Rangotsav 2024. It is an absolute honor to be the host for this annual Rangotsav at Vidya Mandir. I am Virajan. Joining me today are Ayan and Sidra. To begin this auspicious event, we invite our esteemed acting director Mahindra Patel sir, the assistant director of Shrimati M. Mehta English Medium School, Manjula Sachin ma'am, our respected principal Divya ma'am, and dedicated members of Shivam for the ceremonial lighting of the lamp. In our culture, lighting the lamp symbolizes the removal of ignorance and spreading of wisdom and knowledge. Let's illuminate the start of this beautiful evening. As the lamp shines brightly, let us now invoke with the blessings of the Almighty with the Naukar mantra, a timeless prayer for peace, purity, and compassion. ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो श्रीधारम् ॐ नमो अरियाणम् ॐ नमो उवजायाणि नमो लोए सब साहुणम् ऐसो पंचन मुकारो सब पावो पणासनो मंगलाणं च सर्वेति पढममहावै मङ्गलं पढममहावै Good morning, my name is Jaini. Good afternoon. My name is Jill. Today, as we gather to celebrate this special occasion, we turn to the source of all knowledge and creativity, Ma Saraswati. She whose Veena string vibrate with the sound of wisdom and whose light the path of learning. Our prayer, Teri Veena Ki Ban Jao Tan, is more than just words. It's a deep wish to become one with her, melody to fill our heart and mind with her divine knowledge. Through this prayer, we offer ourselves as a vessel of learning, creativity, and inspiration of goddess of wisdom. Let us now immerse in the soulful prayer, Teri Veena Veena Ki ki Ban ban Jao jao Tan. tan.
ऐसा दे मुझको माँ वरदान, तेरी वीणा की बन जाऊं तान। ऐसा दे मुझको माँ वरदान। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। आ, 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 आए चरणों में जो भी तुम्हारे, दूर अज्ञान हो उसके सारे। आए चरणों में जो भी तुम्हारे, दूर अज्ञान हो उसके सारे। मन का मिट जाए सब अंधकार, मन का मिट जाए सब अंधकार। ऐसा दे मुझको माँ वरदान, तेरी वीणा की बन जाऊं तान। ऐसा दे मुझको माँ वरदान। जय माँ सरस्वती, 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 जय माँ सरस्वती। मुझे तैरने दे या फिर बहना सिखा दे, अपनी रजा में अब तू रहना सिखा दे। मुझे शिकवा ना हो कभी भी किसी से, हे ईश्वर मुझे सुख और दुख के पार जीना सिखा दे। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल प्रेयर। Our annual function 2024 is based on the theme Dharohar, celebrating the rich heritage of our culture and traditions. Dharohar. Dharohar means inheritance, our traditions, values, and customs passed down through generations. As we celebrate this evening, let us remember the words of Mahatma Gandhi. A nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people. Tonight, we take pride in our inheritance and celebrate the spirit of our country. संगीत नृत्य और कला है हमारी धरोहर की पहचान। संगीत नृत्य और कला है हमारी धरोहर की पहचान। संस्कृति से सजी ये भूमि, भारत है महान, भारत है महान, भारत है महान। Our heritage is recognized through music, dance and art. This land adorned with culture makes India great. Before we continue, let us prepare to be enchanted by the talented students of 6th I who will present a vibrant theme drama on Dharohar showcasing the spirit of our rich heritage. As we begin, let us remind ourselves that our heritage is not just a thing of a past, but a living treasure that shapes identity, our future. As Rabindranath Tagore said, let your life lightly dance on the edges of time like a dew on a tip of a leaf. We are here to celebrate the varied dance of culture, life, and legacy. संस्कृति का दीप जलाए, परंपराओं का मान बढ़ाए। संस्कृति का दीप जलाए, परंपराओं का मान बढ़ाए। धरोहर की इस माटी को अपने कर्मों से और महकाए। Let's light the lamp of culture, elevate the honor of our traditions. Let's enrich this heritage soil with the fragrance of our deeds. Sit back, relax, and enjoy as we bring to life the colors of India through music, dance, drama, and celebration. Let the evening unfold the magic of Dharohar. Presenting to you the Rangotsav of Standard 5th and 6th.
हरि ओम। हरि ओम। कथमस्ति? अहं कुशली अस्मि। भवान् कथमस्ति? अहमपि कुशली अस्मि, धन्यवादः। चलतु अद्य वयं सर्वे उद्याने मिलामः। अस्तु, मिलामः। केचन मित्रान् भवान् दूरवाणी करोतु, केचन मित्रान् अहमपि दूरवाणी करोमि। अस्तु, तर्हि मिलामः। जा जल्दी जा। नमो नमः, 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 नमो नमः। अहं सर्वत्र पश्यामि, किन्तु कुत्रापि अस्माकं संस्कृतेः आदरः न दृश्यते। शिवराजः, अहं मनसि चिन्तयामि, अस्माकं संस्कृतिके किमर्थं न दृश्यते। आम सांस्कृतिक धरोहर अस्माकं गर्व अस्ति। यः न केवलः भूतकाले अपि तु वर्तमानकाले अपि तस्य महत्त्वम् अस्ति। किं वदसि? एषा धरोहर कः अस्ति? अरे भावान न जानती, एषा धरोहर अस्माकं परंपरा, भाषा, कला, आचार, व्यवहार च ददाति। सांस्कृतिक धरोहर अस्माकम् अस्तित्वम् अस्ति। किन्तु यदि जनाः आधुनिकता प्रति आकर्षन्ते तर्हि एषः धरोहर नष्टं भविष्यति। न आधुनिकता सह अस्ति, किन्तु सांस्कृतिक धरोहर सदा मनसि धारितव्यमस्ति। एषः धरोहर अस्माकं परिचयम्, अस्माकं विशेषता दर्शति। तर्हि किं करिष्यामः? यथा वयं यथाशक्ति अस्माकं धरोहर जानीमः, रक्षायां च वयं सर्वे मिलित्वा शेरीनाटक, समूहगान, नृत्य इत्यादि कृत्वा धरोहरस्य प्रदर्शनं करिष्यामः। अहं कार्यं करिष्यामि, इदं कार्यं मनोहरं भविष्यति। उत्तमं, वयं सर्वे मिलित्वा धरोहर रक्षामः, प्रचारः च। अहो भवन्तः यस्य विषये वार्तालापं कुर्वन्ति, विद्यामन्दिरे श्री कानुबाई सांस्कृतिक भवने प्रचलति एव। आमामपि दृष्टवान्। भवन्तः जानन्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रमस्य विषयः अस्माकं धरोहर एव अस्ति। चलतु चलतु, अद्य वयं सर्वे मिलित्वा एतत् कार्यक्रमं पश्यामः। शीघ्रं कुर्वन्तु। आम्, शीघ्रं कुर्वन्तु। आम्, शीघ्रं कुर्वन्तु। धन्यवाद धन्यवाद। धरोहर हमारी अतीत की शान, संस्कृति की छवि, यह देश की जान। हर कण में बसी है पुरखों की बात, संजोए चले इसे ये हमारी सौगात। Hello, my name is Ansh. Hello, my name is Satwa. Imagine standing on the battlefield, surrounded by the noise of war, unsure of what to do next. This was the moment Arjun faced, his heart filled with doubts, his mind filled with questions. And then, like a ray of light in the darkness, came Lord Krishna offering the wisdom of ages. Through divine conversation, Krishna not only guided Arjun, but gave the world the eternal teachings of the Bhagavad Gita. Today we bring that sacred moment of life through our performance Krishna Vani, where the words of Krishna meet the heart of Arjun. Get ready to witness a powerful blend of dance and devotion, capturing the essence of courage, faith and eternal wisdom. Presenting Krishna Vani. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ्य संभवामि युगे युगे। अखंड है प्रचंड है जो गीता में लिखित है, श्री कृष्ण की है वाणी वेद व्यास से रचित है। श्री गणेश ने लिखा था जिसको अपने दांत से, है एक महान गाथा जिस पे जीवन आश्रित है। अखंड है प्रचंड है जो गीता में लिखित है, श्री कृष्ण की है वाणी वेद व्यास से रचित है। श्री गणेश ने लिखा था जिसको अपने दांत से, है एक महान गाथा जिस पे जीवन आश्रित है। अंधकार जो भी मन में उसमें खिलखिला धूप, सूक्ष्म कण में भी है कृष्ण और वही विश्व रूप, जिसने शस्त्र ना उठाया और धर्म को जिताया। चक्रधारी वो महान जो है विष्णु का स्वरूप। कुरुक्षेत्र
कतार में खड़े हैं देखो सारे ही महारथी। भीष्म के विपरीत धर्म साधे कृष्ण सारथी। शीश काटे पांडवों का शस्त्र में न धार थी। जो कर्ण के थी सामने वो पंख की ही ढाल थी। शस्त्र डाल देख कर कुटुंब सामने था श्रेष्ठ धनुर्धारी जो न आया काम में। गांडीव जो हाथ में था छोड़ा हाथ से। पार्थ ने फिर हाथ जोड़ पूछा नाथ से कि प्रभु दुविधा में फंसा हूँ मुझको रास्ता दिखाए। मेरे सामने अपने कैसा युद्ध फिर बताए। जिसने गोद में खिलाया उस पे कैसे शस्त्र साधु। जिनके हृदय में ही मैं हूँ उनको कैसे बाण मारूं। पीड़ा मेरे मन की प्रभु आप समझिए। कैसे निकलूं बंद से ये ज्ञान दीजिए। छोटा सा वो भाग है ले जाने दीजिए। वे सारे मेरे भाई उनको माफ कीजिए। वो विजय भी क्या विजय हो जिसमें रक्त बहे अपनों का। रहता है आशीष सदा सर पे मेरे अपनों का। मैं सबको लेके इस जगह से दूर चला जाऊंगा। वो तो मेरे अपने उन पे शस्त्र ना उठाऊंगा। युद्ध ना करूंगा करता मिथ्य को स्वीकार मैं। युद्ध ना करूंगा करता मिथ्य को स्वीकार मैं। युद्ध ना करूंगा करता मिथ्य को स्वीकार मैं। बात सुनो पार्थ तुम ये ज्ञान की ही बात है। वो तुम्हारे अपने हैं पर धर्म के खिलाफ है। मैंने स्वयं युद्ध को प्रयत्न किया टालने का। दुष्ट ने सभा में मुझको यत्न किया बांधने का। 5 गांव मांगे पूरे राज्य के बदले में। दुष्ट ने वो देने से भी मना कर दिया। घमंड से भरा हुआ खड़ा था दुर्योधन। भरी सभा में युद्ध का ऐलान कर दिया। उस सभा में चीख कर ये बात भी कही थी। बिना युद्ध के न दूंगा सुई की नोक भर जमी भी। जिन्हें धर्म का प्रतीक तुम बता रहे हो पार्थ। वो तब कहाँ थे जब सभा में नग्न द्रौपदी थी। ये भोलेनाथ ने फिर अपने रूप को बढ़ाया। वो रूप था विराट पूरे जग में ना समाया। विराट रूप देख हाथ जोड़े पार्थ ने। फिर गीता का जो सार था वो बोला नाथ ने। आरंभ का आरंभ मैं और अंत का भी अंत हूँ। अधर्म का हूँ नाश और धर्म का मैं संत हूँ। सूर्य की किरण भी मैं ही वर्षा मेघ हूँ। ज्ञान का भंडार मैं ही चारों वेद हूँ। शांत और शालीन है जो त्रेता का वो राम हूँ। क्रोध का भी रूप मैं ही परशुराम हूँ। प्रेम का जो रूप मेरा वो तो कृष्ण रूप है। भक्त का जो रक्षक नरसिंह मैं महान हूँ। मुझसे ही सृजन है सबका मुझसे ही प्रलय है। आत्मा है नित्य बदलती वस्त्र रूप देह। मुझसे ही जन्म है और मुझ में ही मरण है। शरीर का मरण है होता आत्मा अमर है। रिश्ते नातों से बड़ा है तेरा जो धर्म है। धर्म के लिए लड़े तो तेरा ये कर्म है। खुद को मुझको सौंप करके गांडीव तू उठा ले। अधर्म तेरे सामने तू धर्म को जिता दे। अधर्म तेरे सामने तू धर्म को जिता दे। देख कर प्रचंड रूप नाथ का अनंत रूप। कृष्ण का विस्तार था वो कृष्ण का जो विश्व रूप। भुजा का कोई अंत ना था धड़ की भी शुरुआत ना थी। अनगिनत अनंत सर थे जिनकी कोई था ना थी। पार्थ भी चकित हुआ और बोला चक्रधारी से। हो रहा भयभीत मैं ये बोला वो गिरधारी से। स्वयं को समेटो सर पे पंख को सजाओ। जो रूप आपका था उसी रूप में आ जाओ। फिर प्रभु ने स्वयं का वो छलिया रूप धर लिया। हाथ में थी मुरली सर पे मोर पंख धर लिया। पार्थ ने प्रणाम करके धनुष को उठाया। गीता का जो सार था वो तुमको है सुनाया। श्री कृष्ण का ही कहना है तुम हाथ में कमान लो। धर्म को बचाना है तो धर्म का तुम ज्ञान लो। धर्म से बड़ा ना कोई बात तुम ये मान लो। धर्म की हो बात कर दो जान दो या जान लो। Devotion is not an act, it is a feeling deeply rooted in our heart. What a soulful beginning! Good evening, ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow students. Hello everybody, my name is Prajapati Yash. I am from class 6J. And my name is Ruth Patel and I am from class 6J. Join us on a journey into the world of mentorship and learning. Witness the sacred bond between a guru and shishya as they navigate the path of knowledge together. Discover the challenges they face and the lessons they learn along the way. The story of Aruni and Eklavya,
the archer's pride, and the tale of unfold. Witness the unwavering dedication of a young archer who seeks to master his craft. Discover the challenges he faces and sacrifice he makes to pursue his passion. So let's enjoy the drama which is presented by the students of class 6J. तस्मै श्री गुरुवे नमः। પ્રણામ ગુરુજી. હા, તમે સૌ પોતપોતાની કુટિયામાં જતા રહો. બેટા આરુણી. જી ગુરુદેવ. ખેતરમાં જઈ જોઈ આવને કે ખેતરની પાટ તૂટી તો નથી ગઈ ને? જી ગુરુજી. આ શું? ખેતરની પાટ તૂટી ગઈ છે. શું કરું? લાવો એને બનાવવાનો પ્રયત્ન કરું. આ શું? ખેતરની પાળ તો રહેતી જ નથી. આમનું આમ રહ્યું તો ખેતરનું બધું પાણી બહાર નીકળી જશે. હા, એક કામ કરું, હું જાતે જ પાળ બનીને અહીંયા સૂઈ જાઉં. આરુણી કેમ નથી દેખાતો? શું કહ્યું? ખેતર? હા, મને યાદ આવ્યું. મેં જ એને ખેતર મોકલ્યો હતો. શું તે હજુ સુધી નથી આવ્યો? મને લાગે છે આપણે તેને શોધવા જવું જોઈએ. ચાલો શિષ્યો. એને અહીંયા લાવો. બેટા આરુણી, તો અહીંયા કેમ સૂતો હતો? પ્રણામ ગુરુજી. કાલે તમે મને અહીં ખેતરની પાળ તૂટી ના જાય એટલા માટે મોકલ્યો હતો. હું જ્યારે આવ્યો ત્યારે ખેતરની પાળ તૂટી ગઈ હતી. મેં એને બનાવવાનો ખૂબ જ પ્રયત્ન કર્યો પણ વારંવાર પાળ તૂટી જતી હતી. એટલે હું પાણીનો પ્રવાહ રોકવા માટે હું જાતે જ પાળ બનીને સૂઈ ગયો. વાહ બેટા આરુણી, ધન્ય છે તને અને તારી ગુરુ ભક્તિને. તે મારા આદેશ માટે તારા જીવની પણ પરવા ના રાખી. જા, હું તને આશીર્વાદ આપું છું કે તને બધી વિદ્યા આપોઆપ પ્રાપ્ત થશે.
આજે આપણે જંગલમાં આટલી દૂર સુધી કેમ આવ્યા છીએ? અર્જુન, સાચી શિક્ષા ગુરુકુળમાં રહી અનુકૂળ સંજોગોમાં નહીં, પરંતુ પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં મળે છે. એક વ્યક્તિનો સાચો ગુરુ તેની પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ છે. એટલે આપણે અહીં જંગલમાં આટલા દૂર શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવા આવ્યા છીએ? હા યુધિષ્ઠિર. ગુરુજી, અહીં ભોજનની વ્યવસ્થા તો હશે ને? ભીમ, આજે ભોજન પરથી ધ્યાન હટાવી શિક્ષા પર ધ્યાન આપજે, સમજો? ગુરુજી, આજે મારું બાણ અર્જુનના બાણના પહેલા જ શિકારને વીંધી નાખશે, જોજો તમે. દુર્યોધન, આજની શિક્ષા થોડી અલગ છે. રાજકુમારો, આજે હું તમને એક લક્ષ્ય આપીશ, તમારે તે સાધવાનું છે. જી ગુરુજી. યુધિષ્ઠિર, તું પહેલા આવ. ના ગુરુજી, યુધિષ્ઠિર કેમ, પહેલા હું આવીશ. દુર્યોધન, યુધિષ્ઠિર તમારા બધામાં જ્યેષ્ઠ છે, એટલે એ જ પહેલા આવશે. દુર્યોધન, મોટા ભાઈ વિશે એક પણ શબ્દ બોલે છે તો તારી ખેર નહીં. ભીમ, ખોટી ખોટી ધમકીઓ શું આપે છે? હિંમત હોય તો મેદાનમાં આવી જા. દુર્યોધન, ભીમ, તમે બંને લડવાનું બંધ કરો. હું જેને બોલાવીશ એ જ પહેલા આવશે. ગુરુજી, દુર્યોધનને પહેલા હોય તો મારે કાંઈ વાંધો નથી. ના યુધિષ્ઠિર, દુર્યોધન હવે વચ્ચે આવવાની માંગણી નહીં કરે. કેમ દુર્યોધન? જી ગુરુજી. યુધિષ્ઠિર, તું અહીંયા આવ. હા ગુરુજી. યુધિષ્ઠિર, પેલા પક્ષીને આંખ પર નિશાન સાધ. ભલે ગુરુજી. શું દેખાય છે યુધિષ્ઠિર? પક્ષી, ઝાડ અને પાછળ જંગલ. સારું, તું બેસી જા. દુર્યોધન, તું આવ. જી ગુરુજી. દુર્યોધન, પેલા પક્ષીની આંખ પર નિશાન સાધ. જી ગુરુજી. શું દેખાય છે દુર્યોધન? પક્ષી દેખાય છે અને જંગલ દેખાય છે, અને ગુરુજી, પેલા પક્ષી પાછળ એક મોટો બિલાડો દેખાય છે. સારું, તું બેસી જા. જી ગુરુજી. ભીમ, તું આવ. ભીમ, પક્ષીની આંખ પર નિશાન સાધ. જી ગુરુજી. શું દેખાય છે ભીમ? ગુરુજી, પક્ષી દેખાય છે અને તેના પર કેરીઓ દેખાય છે. સારું ભીમ, તું બેસી જા. જી ગુરુજી. અર્જુન, તું આવ. જી ગુરુજી. શું દેખાય છે અર્જુન? પક્ષી દેખાય છે ગુરુજી. એની ઉપર નિશાન સાધ. હા ગુરુજી. શું દેખાય છે અર્જુન? પક્ષી જ દેખાય છે ગુરુજી. બીજું શું દેખાય છે તને અર્જુન? બીજું કાંઈ જ નહીં. વધુ ધ્યાન લગાવ અર્જુન. હા ગુરુજી. બોલ, હવે તને શું દેખાય છે? ફક્ત પક્ષીની આંખ જ દેખાય છે ગુરુજી. વાહ અર્જુન, બાણ નીચે કરી દે. રાજકુમારો, આજે આપણને શું શીખવા મળ્યું? કાંઈ જ નહીં ગુરુજી, આ અર્જુન તો ખોટું બોલે છે. એને આટલું મોટું જંગલ, પેલું ઝાડ, અને આને કાંઈ જ નહીં દેખાતું. ના દુર્યોધન, અર્જુન ખોટું નથી બોલી રહ્યો. જ્યારે તમારું સંપૂર્ણ ધ્યાન તમારા લક્ષ્ય પર હોય છે, ત્યારે તમને તે લક્ષ્ય સિવાય કાંઈ જ નથી દેખાતું, અને ત્યારે જ તમે તે લક્ષ્યને સાધી શકો છો. સમજ્યા રાજકુમારો? જી ગુરુજી. ગુરુજી, આ શું? અરે, આવી વિદ્યા કોને શીખવી છે? કોણ છે આવો ધનુર્ધર? ચાલો આપણે તેને શોધવા જઈએ. સુખી થાઓ. બાળક, તું કોણ છે? મારું નામ એકલવ્ય છે.
હું અહીં જંગલમાં જ હું તારી ધનુર્વિદ્યાથી બહુ પ્રસન્ન થયો છું. આવી અસાધારણ વિદ્યા આપનાર ગુરુ પણ સાધારણ નહીં હોય. ક્યાં છે તમારા ગુરુ? તો ચાલો, મારે તેમના દર્શન કરવા છે, જેને તને આવી ધનુર્વિદ્યા શીખવી છે. ભલે ગુરુજી, આવો મારી સાથે. આ છે મારા ગુરુજી. આ તો મારી પ્રતિમા છે. બાળક, હું કાંઈ સમજો નહીં. અને તમે તો વાહ એકલવ્ય, ધન્ય છે તને અને તારી ગુરુ ભક્તિને. ગુરુજી, વાહ એકલવ્ય, હું તારી ધનુર્વિદ્યાથી બહુ પ્રસન્ન થયો છું અને હું તારો ગુરુ છું. તો શિષ્ય તરીકે તારે હવે મને ગુરુ દક્ષિણા આપવી પડશે. શું તે તારા ગુરુને ક્યારેક ગુરુ દક્ષિણા આપી છે? અચ્છા, તો મારે તારા જમણા હાથનો અંગૂઠો જોઈએ. વાહ એકલવ્ય, ધન્ય છે તને અને તારી ગુરુ ભક્તિ. જા, હું તને આશીર્વાદ આપું છું કે આવનારા હજારો વર્ષો સુધી ઇતિહાસ તને એક આદર્શ શિષ્ય તરીકે યાદ રાખશે અને તારું નામ અમર થઈ જશે. अधिकार औरों का अधिकार. Wow, what an outstanding performance we have just witnessed. A teacher is the one who creates a passion for learning. This drama serves as a beautiful reminder of the values that guide us and the impact teachers have on our lives. खम्मा गणिसा, आप सबरी तबीयत की गण ऐसा, मैं तो राजी खुशी हासा. तो चालो, आप सबरी खुशी ना छोकी निकारा. की गण सा. We are delighted to present to you a scintillating Rajasthani dance performance showcasing the vibrant and rich heritage of Rajasthan. Rajasthan, the land of kings, is a treasure trove of culture, history and artistry. From its majestic palaces to vibrant tradition, Rajasthan offers a colorful tapestry that enchants every visitor. But one of the most beautiful aspects of this vibrant state is its rich dance tradition, deeply rooted in its culture, telling stories of bravery, love and devotion. So ladies and gentlemen, be ready to immerse yourself in the rich heritage of Rajasthan. Every step and every move will transport you to the heart of desert state. Let's enjoy a beautiful fusion dance. Aao ji padharo mare desh re. आओ मिलकर सजोए इस धरोहर का मान, हर युवा को सिखाएं इसका हो हर मन में अभिमान. हमारी पहचान है हमारी संस्कृति का गौरव, इस धरोहर की छांव में बहे प्रेम का हर स्वर. हमारे देश में काई करो बखान. मारू मारे देश रो मैं काई करूं बखान. धरती सुनहरी लहरियों के सरियों आसमान.
धरती सुनहरी लहरियों के सरियों आसमान। आओ जी पधारो हमारे देश जी, ओ आओ जी पधारो हमारे देश जी। Trooper Records, Rap Rebel Music. बैठो दाया पर भारी स्वैग तो देखो मारो, बैठो दाया पर भारी स्वैग तो देखो मारो। कर वेलकम धारो मारा देश पधारो, कर वेलकम धारो मारा देश पधारो। देसी कल्चर को चढ़ियो है क्रेज, आवे जावे है अंग्रेज। पधारो मारे देश देखो भाई जी ऊँटांगी रेस। चल जद मारी ऊँट सवारी, फेल ऑडी फेल फरारी। अरमानी का जूता नहीं पहना, पहना मैं जूती करारी। हट धोती शापो पहने बबोसा, बन्ना पहने ब्रीजस। मारवाड़ का लोग निराला निराला बाका भेष। मीठी मारवाड़ी मैं कहवा जी, हुकुम पधारो मारे देश, हुकुम पधारो मारे देश, हुकुम पधारो मारे देश। वेलकम धारो मारा देश पधारो, कर वेलकम धारो मारा देश पधारो। कर वेलकम धारो मारा देश पधारो, कर वेलकम धारो मारा देश पधारो। ना जाओ जी मन दीद कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले उन बंगा जी मैं कह लगे। मर इबड़ में जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी। मन दामन में पा ही खुशी रे, झुम 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 झुम। ओ मर इबड़ में जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी। मन दामन में बाधी खुशी रे, झुम 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 झुम। Collaboration with the folk sounds of Rukhan. Music by rapper Balam Kunal Verma representing Rajasthan. Yeah,
I want all my folks to come and put your hands up on this lazy tune. Rajasthan haru Rajasthan, Rajasthan haru Rajasthan, Rajasthan haru Rajasthan, hara geet na sune hai firangi saat. Rajasthan haru Rajasthan, Rajasthan haru Rajasthan, Rajasthan haru Rajasthan, din rangila satrangi raat. Kesariya bal mein aavo ji, bhari ghumar the nakrali ji. Kesariya bal mein aavo ji, bhari ghumar the nakrali ji. Kesariya bal mein din rangila, haan din rangila satrangi raat. Suraj ri dhoop peepal ri chhao, jag sobhi sundar bharo gaon, angor sunahro registan. Rajasthan haro Rajasthan, 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 hara geet na sune hai firangi saat. Incredible energy. What a vibrant showcase of our culture roots. Myself Partha Patel from 5th I. Myself Deep Patel from 5th I. Good afternoon, respected teachers and dear friends. We are excited to announce a special mime performance that we will be presenting today. This performance depicts the powerful story of Draupadi Vastraharan from the Mahabharata. That's right. In this mime, we will express Draupadi's struggles, her resilience in the face of humiliation, and the divine intervention that restores her dignity. Mime is unique art form that uses only gestures and expressions to tell a story, allowing us to convey deep emotions without words. We invite you all to join us in this captivating journey and feel the strength of Draupadi's spirit. Thank you, and we hope you enjoy the performance.
What a remarkable display of emotions. Silence has truly never been more eloquent. मुझो कच्ची बा बहनों की आयो मुझो गर्मी कैडी है हाय मैं की गजा गजा રામ રામ. થારું નામ શું? મારું નામ રિવાંશી છે. મી અને મહેમાન એક બોરાવાળા. આ તો સ્ત્રીઓ ગાય છે. આ તો મહેમાનવાળું ગીત છે. રાનો એટલે કોણ? રાનો ઓચિંતો એટલે રાજા આવશે. કચ્છમાં તો મહેમાનને પણ રાજા જ ગણવામાં આવે એવી અતિથિ સત્કારની ભાવના છે. મહેમાનોને ઉતારો શું આપશું, ભોજન શું આપશું, એ બધી જ વાત જ્યારે સ્ત્રીઓ ગાતા ગાતા કરે ત્યારે આપણે તો જોતા જ રહીએ. તો ચાલો આ રંગને હવે જોતા જ રહીએ. I would like to take a moment to express our heartfelt appreciation for the Shivam members. The Shivam members have consistently shown unwavering support and dedication to our school, whether it's during Rangotsav, various festival celebrations, sports day, or other important school activities. Their efforts make a significant difference. Their enthusiasm and willingness to lend a helping hand, organize events, and create a vibrant atmosphere for our students are truly commendable. They contribute immensely to the smooth running of events, ensuring our students have enriching experiences in and outside the classroom.
What a breathtaking performance and highly energetic dance. Better every day. Today, we are excited to share insights about Palampur, a city rich in history and culture. Palampur, originally known as Praladpur, was named after a legendary king Pralad and has served a center for trade and culture over the centuries. The city is known for its vibrant trades in flower and scents, especially roses, which have boosted its economy and culture. Palampur also known for its architectural beauty. As we know Palampur's history, let's appreciate its roots as Praladanpur and its unique contribution in the world of floriculture and scents. Thank you for your attention. Good afternoon, everyone. Better every day. दूर ओबे पर कोयल बोली, रस की जोड़े कैरियो गोली, सबको डोला दे है कलंदर अपनी पालनपुर की बोली. बख्शिश पालनपुर से लेते ने दुनिया के खूणे खूणे में वसनार तमाम पालनपुरियों को फिरो दुनिया के मई बंके फरो जे मन में धारी है. फूलो फलो ने जश पौमो दुआ कायम अमारी है. अपने सुख दुख मो पालनपुर को भूली जो मन कुके रमे हो इसके खोड़े मो अने जन्मभूमि तमारी है. अल्लाह तुमको खबर है अपने विद्या मंदिर निहाल में इंग्लिश मीडियम के छोकरे घणा गोणे वाले हैं अने अखे पालनपुर के खाने की ने पीने की ने देखने की ने अने वाली पालनपुरियों की बात होने वाली है. आओ तुमको पालनपुर दिखाओ. अरे खसो खसो भाई घोड़ा गाड़ी आवी. नगरी छे आजा बाग बगीचा महके छे. अत्तरनी नगरी छे आजा बाग बगीचा महके छे. फूल फूल मां सुगंध ज्या मानव पण हर पल महके छे. पालनपुर बोले छे, पालनपुर बोले छे, पालनपुर बोले छे, बोले छे. पालनपुर बोले छे. पाताळेश्वर कीर्ति स्तंभनो छे इतिहास अनोखो. पल्लविया जी पार्श्वनाथ नो छे महिमा जानो को. मुरसद ने अनवर काजी नी बंदगी जा कण कण में छे. सिद्धराज नो जन्म अहीं प्रहलादन नी भूमि आ छे. शायर ने गजलो अहीं जा गागर मां सागर छलके छे. शायर ने गजलो अहीं जा गागर मां सागर छलके छे. फूल फूल मां सुगंध ज्या मानव पण हर पल महके छे. पालनपुर बोले छे, पालनपुर बोले छे, पालनपुर बोले छे, बोले छे, पालनपुर बोले छे. हेडो हेडो सकबाजी की लरियो गुड़े बधे ने धक्का मुक्की मारियो. तीन बस्ती और नौनी बाजार की होकड़ी होकड़ी गलियों. पालनपुर की मीठी बोली बच्चा बच्चा बोलियो. अरे नवाब की नगरी जा जोरावर पैलेस भी डोले छे. नवाब की नगरी जा जोरावर पैलेस भी डोले छे. फूल
ફૂલમાં સુગંધ જ્યાં માનવ પણ હર પળ મહેકે છે પાલનપુર બોલે છે પાલનપુર બોલે છે પાલનપુર બોલે છે પાલનપુર બોલે છે पालनपुर का नाश्ता चखाओ सुखड़िया ना पेड़ा ने भारत नी सोड़ा सारी होगी ललना भजिया ने माधवी ने मारा मरी अल्पाहार नी चमचम ने जलेबी जय अंबेनी जनता नी कचोरी साथे खाटी चटनी तेनी अरे मणिलाल नी पानी पूरी अला मोमे पोणी आ गया आ मणिलाल नी पानी पूरी खाता मोढ़ा मलके छे फूल फूल માં સુગંધ જ્યાં માનવ પણ હર પળ મહેકે છે પાલનપુર બોલે છે પાલનપુર બોલે છે પાલનપુર બોલે છે પાલનપુર બોલે છે ने अमर बख्श जाओ जसने मुसाफिर छे प्रेम रावल ना चित्रों ने सैयद ने फोटोग्राफी छे प्रणव मिस्र नी सिद्धि ने आ जगह खाए जानी छे सात गेट मां बंद नगर ने अंदर रोज उजाणी छे सम्यक दर्शन सम्यक वर्तन विद्या मंदिर शिकवे छे सम्यक दर्शन सम्यक वर्तन विद्या मंदिर शिकवे छे फूल फूल मां सुगंध ज्या मानव पण हर पળ મહેકે છે પાલનપુર બોલે છે પાલનપુર બોલે છે પાલનપુર બોલે છે પાલનપુર બોલે છે પાલનપુર What a remarkable performance. Through this dance, the essence of Palanpur, its vibrant streets, rich food and royal heritage was brought to life. Palanpur is not just a city, it is a symbol of pride and tradition for all of us. Hello everyone, my name is Krishu. My name is Vikrant. And today we are excited to announce your poem of Kumbhar. हे माटी कहे कुंभार ने तू अमथा खुंदे मुझने पण एक दिए वो आवशे के माटी खुद से तुझने कियो रे कुंभार ने कियो रे कारीगर कोना रे हाथे तू घड़ायो माटी ना मनखा कोना रे हाथे तू घड़ायो मस्त मगन थई नाचर जीवड़ा विठ्ठल विठ्ठल बोल विठ्ठल विठ्ठल बोल. Good morning everyone, better every day. I am Krisha Chaudhary from 6th I. Today we are privileged to witness a stunning performance of Vitthal dance, a cultural treasure of Maharashtra. This dance honors Lord Vitthal, a symbol of love and devotion. Our talented students will bring this tradition to life, sharing its beauty and spiritual significance. Let's welcome them with a round of applause.
पावलांनी आम्हा वाळवंटी तुझी सावली गळा भेट घेण्या भीमेची निघाली तुझ्या नाम घोषात इंद्रायणी यह कहानी एक विठ्ठल भक्त गोरा कुंभार की है। भुवरी अवतरी रंगरूप है विठ्ठला विठ्ठला माऊली ही बरेचे तिरी निज सुख है विठ्ठला विठ्ठला माऊली युगे युगे विठे भरी शोभे कर घटावरी गरुडावरी आला माझा कानडा कैवारी सावळा हा माझा राजा गजरा झाला हरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठू माऊली विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल माझी विठू माऊली विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठू माऊली विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल माझी विठू माऊली विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी अरे वाह, आज तो माँ बेटे दोनों विठ्ठल की आरती में आए हैं। कुछ समय उस विठ्ठल को भूलकर घर परिवार में ध्यान दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विठ्ठल भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। हाँ हाँ, तो परिवार के सारे सदस्यों से मिलने का समय बराबर बराबर बांटना चाहिए ना। देखो, इस विठ्ठल ने तुम्हें मेरी अर्धांगिनी के रूप में चुना और ये नन्हा बालक भी उसी विठ्ठल की ही देन है। हाँ हाँ, विठ्ठल की ही देन है, तो उसी विठ्ठल का प्रसाद समझकर कभी लीजिए ना अपने हाथों में, कभी अपने गोद में बिठाकर खिलाइए ना इसको। यदि आप सारा लाड प्यार उस विठ्ठल पर ही नौछावर कर दोगे तो इस नन्हे विठ्ठल के हिस्से में क्या आएगा? ये गीली मिट्टी। विठ्ठल, अब दोनों विठ्ठल को आप ही संभालिए, मुझे कुएं से पानी लेने जाना है, ध्यान रखिएगा। आज अपने विठ्ठल के लिए मटका बनाऊंगा और प्रतिदिन उस मटके में पानी भर के अपने विठ्ठल को स्नान कराऊंगा। ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज नारावली तुझे नाव ओठी तुझे रूप ध्यानी जीवाला तुझी आस लागली जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आम्हाला करांची विठू माऊली होणारा होताला जाणारा जाताला मागे तू फिरू नको उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची धरू नको तुझ्या हाती आहे डाव सारा इसार गजल कालची रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे
देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे सोबती रे तू तुझाच तुला तुझीच साथ शोधुनी तुझी तू वाट चालेतना उदे जरा उशीर सोडतोस काय धीर आग संपदा पहाट होईल हो देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे धन्य है तू गोरा, तूने इतनी कठिन परिस्थिति में भी अपने विट्ठल का साथ नहीं छोड़ा। तुझ जैसे भक्त पर हमें गर्व है। तुम भी धन्य हो माते जो अपने पुत्र के लिए भगवान तक से लड़ने को तैयार हो गई। जैसे शांति के लिए उसका पुत्र है वैसे ही मेरे लिए है, और कोई अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता। That was truly soul-stirring. Devotion has been beautifully brought to life on stage. Good evening, everyone. My name is Falaknas Patan and I am from 6th J. And my name is Jenny Thakkar. I am from 6th J. Ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow students, today we are thrilled to celebrate the vibrant tradition of Prachin Garbo, a captivating dance that is a part of our cultural heritage for centuries. This beautiful form of Garba is performed annually during the Sharad Navratri festival, which takes place between September and October. Prachin Garbo is not just a dance, it's a celebration of devotion, unity and the joy of community. As we honor this tradition, let us immerse ourselves in its graceful movements, colorful costumes and the deep cultural significance that this dance carries. So let's celebrate together Prachin Garba, Garba, which is presented by the students of 6th J. Thank you. Thank you. अमे मैयारा कंस राजा ना वाला कोई ने न दइए दान ये हारे वाला कोई ने न दइए दान रे मार गड़ो मारो मेरी दियो ने उवर कान रे मार गड़ो मारो मेरी दियो ने कुंवर का हमें मैयारा कंस राजा ना वाला कोई ने न दइए दान ये हारे वाला कोई ने न दइए दान रे मार गड़ो मारो मेरी दियो ने कुंवर कान रे मार गड़ो मारो मेरी दियो ने सुंदर शाह
गोकुळिયું ગામ એ હારે વાલા વચમાં ગોકુળિયું ગામ રે મારગડો મારો તેરી દીયોને કુંવરી કાન રે મારગડો મારો તેરી દીયોને સુંદર શા કોઈ મોતીડે બાંધેલ પાર હારે વાલા મોતીડે બાંધેલ પાર રે મારગડો મારો તેરી દીયોને કુંવરી કાન રે મારગડો મારો તેરી દીયોને સુંદર જા से मोतीड़ा निपाल हारे वाला टूट से मोतीड़ा निपाल रे मारगड़ो मारो दियो ने कुंवरी कान रे मारगड़ो मारो तेरी दियो ने सुंदर शा Legacy flows like a river so deep. In the hearts of time, its treasures we keep. Through history's eyes, we glimpse our grace. The rover is the mirror of our ancestral face. Good evening. My name is Fatima Sheikh from class 6 Thai. And my name is Shlok Patel from standard 6K. Dear esteemed guests, we warmly welcome you to our special yoga performance, a celebration of our rich tradition and culture. Today we come together to honor and preserve our Dharohar, the invaluable heritage that shapes our identity. Through graceful movements and mindful practices, our performers will showcase you the essence of yoga, highlighting its profound connection to our roots and values. We invite you to immerse yourselves in this cultural experience, reflecting to the harmony of your body, mind and spirit. Thank you for being here, witness and celebrate our legacy. Let us honor our past as we embrace the present. Enjoy the performance. I would like to take a moment to celebrate the remarkable achievement of our students. It is my great honor to announce the gold medalist of IGKO, IEO, NSO and IMO. International English Olympiad achievers are Parvan Chaudhary, Advait Rawal, Arav Patel, Dheer Patel, Navya Patel and Dwij Patel. संग संग चलो बढ़ते रहो योग सभी करते रहो संग संग चलो बढ़ते रहो
योग सभी करते रहो। योग ही जीवन का एक आधार है, योग ही जीवन का एक आधार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग ही जीवन का एक आधार है, योग ही जीवन का एक आधार है। योग से जागा सारा संसार है, योग से जागा सारा संसार है। वो सत्य मन रहे स्वस्थ तन, हर सांस में हो नई उमंग। ऐसा हो बस जीने का ढंग, छू ले जो हम उड़कर गगन। योग से जागा संसार है, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग ही जीवन का एक आधार है, योग ही जीवन का एक आधार है। विश्वास है एक योग है, अब दूर हर एक रोग है। आलस से हम लड़ते रहे, हर रोज योग करते रहे। ये ऊर्जा है एक जीत की, इसमें शांति संकेत की। शक्ति है एक साधना, है प्रेम की आराधना। निर्मल हो अंतर आत्मा, मिल जाएगा परमात्मा। ये जीवन का एक सार है, योग से जागा संसार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग ही जीवन का एक आधार है, योग ही जीवन का एक आधार है। अभिमान से कर योग जब जी जान से, हिम्मत से अब तो हम चले, धरती हिले कदमों तले। रोकेगी क्या ये आगिया, करके योग आगे बढ़े। तारों से आगे हमें जाना है, दुनिया को योग सिखाना है। भारत बनेगा विश्व गुरु, इस लक्ष्य को हमें पाना है। योग ही ऐसा धर्म है, उसका ना कोई धर्म है। इससे ही मिटता अंधकार है, योग से ज्यादा संसार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग ही जीवन का एक आधार है, योग ही जीवन का एक आधार है।
मान्यता है संस्कृति जिससे जुड़ी है प्रकृति, विश्वास है एक योग है, दूर हर एक रोग है। संग संग चलो बढ़ते रहो, हर रोज योग करते रहे, ये ऊर्जा है एक जीत की, इसमें शांति संकेत की शक्ति है, एक साधना है प्रेम की आराधना। निर्मल हो अंतर आत्मा, मिल जाएगा परमात्मा, जीवन का एक सार है, योग से ज्यादा संसार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग ही जीवन का एक आधार है, योग ही जीवन का एक आधार है, योग ही जीवन का एक आधार है, योग ही जीवन का एक आधार है। As we reach the end of our wonderful celebration, I request everyone for the school anthem to Happy birthday for a near Mehta school. Children gather here, we love school. Mehta hai, our love for you shall never fade. For God is all of strength, in Him we do and dare. The light begins alone, we cherish everywhere. Then proudly let us stand, united hearts and hands, and pray that God may bless and keep Mehta school, Mehta school, Mehta school, Mehta school, Mehta school. We gather and we're always sing that song, our praise of trust and love, our praise of trust and love. And youthful like some find the way, and youthful like the endless day, and youthful like the endless day. For God is all who stand, in Him we do and dare. The rights against the wrong, we cherish and we bear. And proudly let us stand, united hearts and hands, and pray that God may bless and keep Mehta school, Mehta school, Mehta school, Mehta school, Mehta school. મંદિર ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રીમતી MM મહેતા અંગ્રેજી માધ્યમ શાળા સ્ટાન્ડર્ડ 5th અને 6thનો જે આજે રંગોત્સવ યોજવામાં આવ્યો એ આપને કેવો લાગ્યો? આપનો અભિપ્રાય કહો. ખૂબ જ સરસ લાગ્યો, દર વર્ષની જેમ જ, અને ફેન્ટાસ્ટિક પરફોર્મન્સ હતું બધાનું, અને એવું લાગ્યું કે જાણે રાજસ્થાની ડાન્સ તો રાજસ્થાનમાં પહોંચી ગયા, વિઠ્ઠલનો ડાન્સ હતો એમાં જાણે મહારાષ્ટ્રમાં પહોંચી ગયા, એટલે સુપર. આજે જે રંગોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું એમાં તમને કઈ કૃતિ સૌથી વધારે ગમી? એક તો રાજસ્થાની જે ડાન્સ હતો તે બહુ સરસ લાગ્યો, પછી એક કચ્છી ડાન્સ જે હતો તે કચ્છની સંસ્કૃતિને આપણને બહુ યાદ અપાવી. પાલનપુરની ખાસ વાત કરીએ તો પાલનપુરનો જે આખું સોંગ હતું એના ઉપર આપણને બહુ ધ્યાન અને બહુ આપણને ઇતિહાસની જાગૃતિ થઈ, અને છોકરાઓ બધા ઉમળકાથી બહુ સરસ પરફોર્મન્સ કર્યું છે અને અમે પણ એન્જોય કર્યો. આપના બાળકે કઈ કૃતિમાં ભાગ લીધો હતો? એ પાલનપુર ડાન્સની અંદર ભાગ લીધો. તમને ગમ્યું? બહુ સરસ ગમ્યું. થેન્ક યુ સો મચ.